मधुमक्खी, मधुमक्खी, मधुमक्खी कैसे होती है? मीठी मीठी बोलती है, पर जरा सा छेड़ो तो क्या करती है? काटती है। तो हम लोगों को उसके साथ फ्रेंडली रहना पड़ेगा ताकि काटे नहीं. सो वी हैव टू बी परफेक्ट इन आवर स्पेलिंग्स, because when we are not going to spell our words properly or when we are not writing it properly during the exams, तो हमारी reputation खराब हो जाती है कि इस बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है. So we have to be perfect. और डंक कौन मारता है फिर? टीचर 0 दे देगी. देती है नहीं देती है? स्पेलिंग कट हो जाते हैं, हाफ मार्क्स. So you have to be perfect, and this type of competitions are held in various countries. You must have seen it. USA में बहुत पॉपुलर है, लंदन इज ऑल्सो डूइंग दिस, इंडिया में भी हमारा अभी बहुत पॉपुलर हो गया है. मेनी चिल्ड्रन दे आर लर्निंग दिस. नाउअडेज व्हाट हैपन, आप लोग मोबाइल पे टाइप करते हैं, इट इज ऑटोमेटिकली करेक्टिंग द स्पेलिंग, बट इट इज करेक्टिंग अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंग्लिश. कई बार बिहेवियर की स्पेलिंग आप देखोगे इट इज रॉन्ग, कलर की स्पेलिंग रॉन्ग है, बट वी पीपल वी आर फॉलोइंग द British English. Here also whatever we are going to ask, you have to follow the British. If I'll ask behavior, everyone will say the correct spelling. Don't say that my mobile says behavior spelling is this, color spelling is this. Okay? Now there are 4 rounds. All the participants just listen carefully. There are 4 rounds. Round 1, 2, 3 and 4. In the first round, I'm going to ask you the spelling. Simple spelling, but slightly a lengthier one, but all those spellings have been taken from your textbooks. Okay, second round will be a silent letter, जिसमें silent होता है, जैसे doubt, B, doubt बोलते हैं, B is silent. Just like that we will ask you few questions. Quite, I'm not asking the examples. पहले राउंड में जो 2 होंगे, ध्यान से सुनना, आई एम एक्सप्लेनिंग इट हिंदी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. एक वर्ड पूछूंगी, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा. सोचना है, एक साथ समझकर आपने आंसर, चाहे लिखना है तो लिखिए, वैसे बोलना है तो बोलिए. यू हैव टू स्पेल आउट. 5 मार्क्स, नो पासिंग राउंड, उसमें गड़बड़ होती है, आपने गलत बोल दिया, विल आस्क द ऑडियंस. एक बार एक राउंड हो गया. एक राउंड का फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट में भी स्पेलिंग है, द सेम थिंग. फर्स्ट राउंड विल बी ऑफ 10 मार्क्स. सेकेंड राउंड में साइलेंट लेटर. थर्ड में crossword puzzle. As we have told you, we will give you the clue and one crossword will be given to you on your desk. You have to fill it. And fourth will be the most interesting round, that will be the riddle round. riddles पूछे जाएंगे आपसे. आपको आंसर बताने का 5 मार्क्स है, स्पेल आउट करेक्टली का 5 मार्क्स है, दैट विल बी ऑल्सो ऑफ 10 मार्क्स. थर्ड राउंड विल बी ऑफ 5 मार्क्स. क्लियर? नो पासिंग. अगर टाई हो जाता है तो देन वी विल आस्क यू फ्यू मोर रिडल्स. क्लियर? सो शुड आई स्टार्ट? ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द हाउसेस. नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ग्रुप ए. फर्स्ट वर्ड इज ऑडिटोरियम. ऑडिटोरियम. ऑडिटोरियम वो होता है जहां पर आप, जैसे कारगिल हॉल इज अ ऑडिटोरियम. आपका ये जो है टाइम अभी है, जस्ट चेक इट. इफ यू आर कॉन्फिडेंट यू कैन टेल मी द आंसर. कॉन्फिडेंट? ओके, स्पेल आउट. AUDITORIUM. ओके, दैट्स करेक्ट. 5 marks for Abdul Hamid. Now second, group B, courageous. courageous, हिम्मत, जिसमें हिम्मत होती है, द पर्सन. Children, those who are in the music room, kindly be quiet and close the door. Confident? Still time is there. Okay. 15 seconds more. COURAGEOUS. Okay, is it correct?
Okay, 5 marks. Now C. Significant. 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 Still time is there. C-I-G-N-F Again, repeat from the beginning. S-I-G-N-I-F-I-C-A-N-T. Correct? फिर से रिपीट करो. बेटा सही बोला है, आप लोगों को नहीं मालूम है. फिर से बोलो. S-I-G-N-I-F-I-C-A-N-T. सही है? Okay, 5 marks. Now, group D. हाँ. Comparison. Very easy word. You have learned in degree of comparison. Be confident, then only decide. Still time is there. C-O-M-P-A-R-I-S-I-O-N. It's wrong. 0. Now, who will tell? Okay, he raised the hand first. Beta, this one. बोलो जोर से. Comparison. Good. No, एक ने बोल दिया. एक टॉफी बनती है आपके लिए. Okay, now second part of the first round. Here double letter words are there. In the word double letter is there. Double letter मालूम है आपको? हाँ? Double letter होगा बीच में, ठीक है? Now the first word for group A is appropriate. Appropriate. Nobody will discuss. Appropriate. A-double-P-R-O-P-R-I-A-T-E. Very good. 5 marks. Mic, pass the mic. Your word is interrogative. Interrogative adjective होता है, sentence होते हैं. Few of you pronounce is interrogative. Be confident then. Still you have time, only 10 seconds have gone. हाँ? गलत नहीं, चलो. I-N-T-E-R-R-O-G-A-T-I-V-E. Repeat it again. I-N-T-E-R-R-O-G-A-T-I-V-E. Okay, that's correct. Now group C. Your word is appreciated. Appreciated. तारीफ करना. जैसे आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं. I am appreciating you. A-P-P-R-E-C-I-A-T-E-D. Okay, very good. बहुत आसान वर्ड्स लिए हैं शायद से ना. Okay, now group D. Affectionately. आप लेटर लिखते समय बोलते हो योर affectionately बोलते हैं, योर lovingly, affectionately. Be confident, then only you decide and tell. A-F-F-E-E-T-I-O-N-A-T-E-L-Y. Kindly repeat the spelling. Ma'am, जोर से. A-F-F-E-C-T-I-O-N-A-T-E-L-Y. Okay, that's correct.
that's the end of first round. Everybody scored the same 10, 10 and 10. D has scored 5 marks. Never mind, we have more rounds. Now there is a question for audience. Mysterious. Arnav. Okay, correct. Mysterious. He spelled correctly. There are so many children. आपने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया. Okay, just listen. Auditorium हो गया था. Okay, inconvenient. Inconvenient. Those who are confident. Inconvenient. Okay, बोलो. Stand up and spell it out. नहीं, आपके पीछे वाली that girl. I-double-N you are saying, no, it's wrong. Okay, now we are starting the second round. That is a silent letter word. For example, I told you about the doubt. Okay. Now first word, because I'll pronounce the words as it is pronounced. I will not pronounce as you people pronounce sometimes. Okay. Now the first word. I'm not changing its sequences there. First word is, to group A, plumber. 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 And you have to tell me which letter is silent also. When you will spell it correctly. Okay. L-U-M-B-E-R. B is silent. B is silent. Yes, आप सब लोग इसको क्या बोलते हो? मेरे घर में प्लम्बर नहीं आया है. Plumber is the wrong pronunciation. It is plumber and B is silent. Correct. 5. Now, group B. Scum. 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 The word is S-C-U-M-B. B is silent. Repeat the spelling again. S-C-U-M-B. B is silent. Anyone who can try? S-U-C-C-U-M-B. Scum. Okay. Now third, आपका बारी है. C. Mortgage. Mortgage. The silent word is not pronounced here. That's why it is silent. Mortgage. 5 seconds. Right? M-O-R-A-U-G-A-G-E. गलत. Wrong. Anyone who can try? बीच में 2 बच्चों के हाथ खड़े हो रहे हैं. Okay. जोर से बोलो. गलत है. मॉर्गेज की स्पेलिंग है M-O-R-T-G-A-G-E. T is silent here. Now next is salmon. D. Group D. Salmon. Salmon. ठीक है, ये लोग नहीं बताएंगे. Anirudh will tell me the answer. Ma'am, can I have the definition? Ma'am, definition or part of speech. Part of speech. It is a noun. Ma'am, S-A-L-M-O-N. L is silent. Okay, good. It is a fish. It is the name of a fish. आप लोग इसको कई लोग salmon बोलते हो. L is silent. It is pronounced as salmon. Very easy spelling. नर्सरी में हमने इसको पढ़ा था, बट हमने इसको गलत पढ़ा था हर समय. Yacht.
यॉट। नर्सरी की किताब में होता है यॉट। कर्नल, कर्नल, it's a rank in army. I've given you the clue, but spell it correctly. It is not pronounced as colonel, it is colonel. Tell me the silent letter also. क्या बोल? Group C. It's again very easy. Teachers keep on telling you to bring it or send it on WhatsApp. Receipt. 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 नहीं, बचपन से आप देख रहे हो मैम हिंदी में इसको, जैसे आपको हिंदी में बताया था, इसको हिंदी में रसीद बोलते हैं। रसीद बोलते हैं, दैट इज द क्लू। रिसीट, RECAT. इट्स रॉन्ग। स्वरा, RECEICT. करेक्ट। ओके, अभी ग्रुप आप लोगों का है मानक शाह। कॉलोन, कॉलोन, कॉलोन। इट्स अ स्प्रे। क्लू इज दैट स्प्रे। Okay, we don't have time to ask so many. COLOGNE, G is silent here. Now it's a audience question, very easy one I'll ask, and all the men love it. Champagne. Champagne पीते हैं, देखा है ना मूवीज में जब खुश हो जाते हैं तो champagne. Okay, अनिरुद्ध। Anyone from the? Okay, very good. Clap for him. CHAMPAGNE, champagne. एक और पूछो। फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट कलर होता है अलग अलग, जो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। दो ही बच्चों का हाथ खड़ा हो रहा है, आप बताओ। हाँ, स्टैंड अप एंड से फ्लोरेसेंट। FL, नो, FLUORESCENT। अभी थर्ड राउंड, आफ्टर completing second round, we have 15 marks for A, 10 marks for B, 10 marks for C, and 10 marks for D. सबका 10 है, फर्स्ट वाले का 15 है। हाँ? अभी नहीं। Okay. Now here I will give you the clue and you have to fill the crossword puzzle. Paridhi ma'am will give you the crossword. Now the first one, everyone will listen, and group A, you all also listen. Question is there on the card. When we get it, it's a riddle type of a thing. When we get it, our immunity increases. It is a 11-letter word and it starts with V and ends with N. Your time. Vaccination. कोरोना के बाद आपने वैक्सीनेशन लगाया था? नहीं लगाया, आप 12 साल से सब छोटे हैं। Now second वाला, it is a 12-letter word. It is a shortened form of a word and it starts with A and ends with N. Whenever we have to short a word, छोटा करना है। 3 जगह हिंदी है और 2 जगह सर। Okay, time up. It's abbreviation. We are not asking you. Abbreviation, short form of a word. Now third, it is a 10-letter word and starts with V. These people agree to do something without force. Without force, they do it themselves. It is a 10-letter word and starts with V and ends with S.
They do the work themselves. Nobody can force them. Nobody can force them. No, don't know. They don't know the answer. The answer is Keshav. Volunteers. Volunteers होते हैं. They do the work themselves. Okay, last very easy one. It is a 10-letter word and starts with E. Its presence make all the things scattered here and there. Many people die also. It starts with E and ends with E. Again, I am repeating the question. It is a 10-letter word and starts with E. Its presence makes all the things scatter here and there. Many people die also. भूकंप आ गया? Earthquake. Okay, round 4. It's a riddle. जल्दी से पूछ रहे हैं. इसमें बिल्कुल टाइम नहीं है सोचने के लिए. Only 15 seconds time we will give you to think. Only 15. First one, riddle. What is so delicate that saying its name break it? What is so delicate that saying its name break it? 15 seconds. What is so delicate that saying its name break it? No? Time is going to be up. The answer is anyone? Silence. Now second, what word is pronounced the same if you take away 4 of its 5 pronunciation remains the same? ये 5 लेटर का वर्ड है. अगर उसमें से 4 लेटर हम हटा देंगे तब भी उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा. That is Q. What is that? Q. लाइन में खड़े होते हैं Q. Now C. What can run? ध्यान से सुनना. What can run but never walks? Has a mouth but never talks. Has a head but never weeps. Has a bed but never sleeps. Ma'am, C. C. S-E-A-C. Kalpana ma'am, river is the answer. They are saying C. दे दे. कल्पना मैम इज जज. शी इज सेइंग दे दो. तो 5 marks. Okay, next is if you feed me, I grow. But if you give me water, I die. But if you touch me, you are not happy. What am I? The fire. Fire is the correct answer. Yes. कितना हो?